Hello friends, welcome to my channel. Today onwards, I'm starting a series of non-fiction MCQs. वो सभी MCQs जो कि पिछले कई सालों से UGC नेट एग्जाम्स में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कवर किए जा रहे हैं फ्रॉम द नॉन-फिक्शन सेक्शन दैट वी विल कवर इन दिस सीरीज। नॉन-फिक्शन जो कि एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं. वी कॉन्सेंट्रेट मोर टूवर्ड्स पोइट्री, टूवर्ड्स ड्रामा, टूवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ द लिटरेचर. लेकिन नॉन फिक्शन थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट है जिसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं. तो अब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे. ये भी बहुत स्कोरिंग होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो दैट वी विल कवर टुडे एंड द सीरीज विल कंटिन्यू. लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ. हम लोग हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कवर करेंगे जिससे कि आप लोगों को एग्जाम्स तक याद रहेगा सब कुछ. दैट शुड बी द सिनेरियो एक्चुअली. और आप लोग जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन सिखाऊंगी, ट्राई टू आंसर इट फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन चेक वेदर यू वर राइट और रॉन्ग. और लास्ट में आप कमेंट्स में मुझे अपना स्कोर बता सकते हैं. Let us go for this first question. Which of the following book proposes a political theory? Principia, Leviathan, Anatomy of Melancholy or Liberty of Prophecy? You can go for your answer जो आपको लगता है सही आंसर है. And the correct actual answer is Leviathan. And I hope आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब ही दिया होगा. Leviathan or the matter, form and power of a commonwealth, ecclesiastical and civil, commonly referred to as Leviathan. ये छोटा सा नाम है Leviathan. It's a book written by Thomas Hobbes. साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको भी नोट करते रहिए. That will be a really good revision of all the non-fiction topic for you. Leviathan belongs to Thomas Hobbes. ये आप लोग याद रखिए. And was published in 1651. ये आप लोग याद रखिए. जो भी नोट्स आप इस सीरीज के साथ बनाएंगे that will be quite enough for your non-fiction section. I can assure you that. So Leviathan, Thomas Hobbes, 1651. In this book, Hobbes argued that the absolute power of sovereign was ultimately justified by the consent of the governed. पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, कौन पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, ऑल दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन Leviathan. This question is actually about a very famous text. I know many of you will be able to answer it. Which of the following books is written by a woman? Correct answer is option A, A Vindication of the Rights of Women. A Vindication of the Rights of Women, जिसका पूरा नाम है With Strictures on Political and Moral Subjects, written by 18th century British proto-feminist Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft की लिखी हुई है and it was published in 1792. ये भी आप लोग याद रखिए. ईयर्स को याद रखना बहुत जरूरी होता है. दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ feminist philosophy. Here we reach to question number 3. Which of the following books by Jonathan Swift is a religious allegory? कौन सी बुक है जो कि religious allegory है इन बुक्स में से? The correct answer is option D. Please keep noticing your score. यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है टेल ऑफ टब. A Tale of Tub was the first major work written by Jonathan Swift, composed between 1694 and 97. कंपोज किया गया था 1694 and 97 इन ईयर्स के बीच में, लेकिन पब्लिश हुआ था 1704 में. ईयर्स याद रखिए, ऑथरशिप याद रखिए. आपका हाफ ऑफ द वर्क तो यहीं पर हो जाएगा, पूरी रिविजन हो जाएगी जब तक ये सीरीज कंप्लीट होगी. It is a prose satire intended to defend the church system basically. Anglican Church को डिफेंस करने के लिए लिखा गया था Tale of Tub, so we can call it a religious allegory. Here comes question number 4. Who distinguished between the literature of knowledge and literature of power? किसने किया था distinguish? That you are supposed to tell here. The correct answer is option number B, De Quincey. थॉमस डिक्विंसी इनका पूरा नाम था. आप लोग नाम भी पूरा याद रखिए और सारी एडिशनल नॉलेज को भी नोट करते रहिए. इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. थॉमस डिक्विंसी published in 1848 an essay on the poetry of Pope with a long digression on literature of knowledge and literature of power.
So the function of literature of knowledge according to him is to teach. The function of literature of power is to move. लिटरेचर ऑफ नॉलेज जो है वो आपको कुछ नया सिखाता है और लिटरेचर ऑफ पावर जो है वो आपको लाइफ में मूव करने के लिए कुछ एक्टिव करने के लिए परसुएट करता है. दिस इज व्हाट ही टोल्ड इन दिस डिफरेंस. Next question, question number 5. The stream of consciousness was taken from the book. Which of the book it was taken? Was it the human mind? Was it the principles of psychology? Was it the mind of man? Was it modes of human behavior? The correct answer here is option B, the principles of psychology. The stream of consciousness, क्या होता है ये? This is a metaphor describing how thoughts seem to flow through the conscious mind. The term stream of consciousness was first coined by psychologist William James. आप लोगों को ये भी याद रखना है. This can also be a question and most probably this is a question in my question bank और बहुत बार आ चुका है competitive exams में. William James ने coin किया था. Sorry for that. In the principle of psychology in 1893. 1893. This word was coined by William James in this book, The Principle of Psychology. Next question. G.S. Fraser's The Golden Bow focuses on images, metaphors, symbols or archetypes. This is a comparative study of mythology, the Golden Bow, comparative study of mythology which was published in 1890. सबसे पहले तो इस fact को note कर लीजिए, ये comparative study of mythology है. In this study, Fraser attempted to define the shared elements of religious beliefs and scientific thoughts, discussing some symbols like fertility rites, human sacrifice, the dying god, the scapegoat, and many other symbols and practices whose influence had extended into 20th century culture. So the correct answer is option C, symbols. Next question, question number 7. Eliot's theory of objective correlative appeared in his essay entitled Three Voices of Poetry, Tradition and Individual Talent, The Metaphysical Poets or Hamlet. Actually में इसका पूरा नाम है Hamlet and His Problems, and this one is the right answer here. Hamlet and His Problems is an essay written by T.S. Eliot in 1919. Year आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए 1999, that is 1919. 1919, that is the correct answer. And this essay basically offers a critical reading of Hamlet, specifically the character Hamlet. The essay first appeared in Eliot's Sacred Wood Essays in Poetry and Criticism in 1920. लिखा गया था 1919 में और सबसे पहले appear हुआ था 1920 में in the Sacred Woods. अब ये देखिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता क्या है. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ऐसे इवेंट्स होते हैं किसी भी प्ले में बेसिकली जिससे कि आपको लगे कि व्हाट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हैपन, गोल उससे फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है. In literary criticism, an objective correlative is a group of things or events which systematically represent some or other kind of emotions directly towards the plot of the play. Next question, question number 8. Dr. Johnson's A Dictionary of the English Language was published in which year? देखिए कितने close दिए गए यहाँ पर years, you need to know it perfectly. It is 1755, option 1, and I'm sure many of you already know it. Samuel Johnson's Dictionary of the English Language is one of the most famous dictionaries in history. First published in 1755, the dictionary took just over 8 years to complete. 8 साल लगे थे इसको complete करने में, and required 6 helpers and listed 40,000 words. 40,000 words. That can also be a question, and this amount is nearly, actually we cannot be precise about it, nearly 40,000 words. Next question, question number 9. Table Talk is a collection of essays by which of the following writer? Table Talk is a collection of essays by English cultural critic and social commentator. काफी hints दे दिए मैंने आपको. The correct answer is option C, William Hazlitt. It was originally published in 2 volumes, the first of which appeared in
1821, April 1821 to be precise, and essays deal with topics such as art, literature, and philosophy. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. इसके बाद आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि 10 में से आपका स्कोर क्या रहा. एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू डेली. The concept of architecting is developed by which of the following writers? The correct answer is option C, Derrida. आर्किराइटिंग इज अ टर्म यूज्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर जैक डेरिडा. तो आपको देखिए यहीं पर आपको नेशनैलिटी भी याद हो गई. फ्रेंच फिलोसोफर Jack Derrida, in his attempt to reorient the relationship between speech and writing, Derrida argued that as far back as Plato, speech had always been given priority over writing. And archwriting is the principle of writing as classically determined within the tradition of metaphysics. तो metaphysics के according किस तरीके से लिखा जाता है, that is what we can call archwriting, and developed by Jack Derrida. You may join our online classes to cover any of the subject that I have just discussed, and there is a link given in description. Clicking on that link, you will reach to that WhatsApp number where you need to make the admission query. और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डिफिकल्टी है अभी भी तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.